Good afternoon. Some people are already smiling, so they know me. Some people are looking at me with awe. यही है क्या? Geography begins today. There is no gupshup, there is no... because 15th was my plan to begin the whole course. So it all starts with the syllabus, the definition of geography. It all starts with the learning of the essence of geography. समझ में आया क्या बोला मैंने? Learning the essence of geography, trying to touch the soul of geography. हाथ खोलो पहले. मेरा, I mean, those who have attended my GS classes, they know that I never get late in my class, and fraction of seconds actually matters to me. I don't know, maybe by some God's design, providential design, I may get late sometime, but I'm late today because some technical thing, something, some strategy things came in the way. But from tomorrow you have to come on time. डोर वोर बंद कर दो. बंद कर दो. Movement not allowed. What is the essence of geography? पूछ नहीं रहे हैं, बताने वाले हैं. Geography in the recent years have been looked down upon. It has been seen as a subject which doesn't help building your career. It has been seen as a subject which is arguably the cause of unsuccess. Still, I'm finding so many people around. I don't know from where this rumor came and how it all happened. It's very painful for a geography teacher. It is taking a lot of courage for the newcomers to opt geography and then, sahi bola na? A lot of chaos in your mind. The subject which ruled from 2006-7 to 16, it virtually ruled. And then 16 onwards, there are a lot of criticism. कोई बात नहीं है. 16 से I was absent, I was not teaching. I took up Central Delhi classes in 2021 November batch. That was my first batch after a break of 6 years. 6 years was a long break. Most of the people have forgotten me. People have very small memory in this world. But last batch was fabulous. And in the last batch, I taught 1000 marks, not 500 marks optional. And I provided them every material on environment, on agriculture, on forestry, on economic geography, on industry, on resource, on trade and transport, policies to recommendations to the commission reports, to the new fact and data. Because the real benefit of learning geography is when you look at it comprehensively. जब तक ज्योग्राफी को कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं देखोगे, एज ए होल नहीं देखोगे, एज ए डिसिप्लिन नहीं देखोगे, तब तक
ऑप्शनल का एडवांटेज नहीं मिलेगा. You got this point? Don't get disturbed by all these professional things. So we have to look at geography holistically, and environment is inseparable from geography. Keep in your mind, maybe I cannot afford to talk all this in a GS class, but this is my batch and you are an optional student. I can tell you with confidence that environment is inseparable from geography. So there have been debates about it, because environment, recently, every institute is talking about geography got 8 questions or 10, 12 questions from in the PT. It hurts me somewhere, but actually there are 30, 35 questions, even though I cut short on so many questions. But even if there is one optional student in this class, he will tell you that law of the sea, which I taught 1982 Act in my optional batch, even that has come in GS. आया नहीं, वो भी आया है. People are categorizing it as IR. तो मैं झगड़ा नहीं करता किसी से, लेकिन साइलेंटली अपने बैचेस को तो कह सकता हूँ ना. That is to boost your confidence. The idea is not to create confrontations. But this is my family, I can talk to you. I can give you the confidence that, look, this question was taught in your geography optional and it has fallen in your GS paper. So we as a family will always classify law of the sea question as part of geography. Let the rest of the world classify these questions the way they want. मैं इमोशनल हो गया. एक इमोशनल आदमी का 2 एंड होता है. Either he is self-destructive or he reaches the height. 2 ही चीजें हो सकती है. तुम में से कितना लोग इमोशनल है? All of you will reach the height. क्यों? I am your teacher. मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा. इमोशनली तुमको राइट डायरेक्शन में और तुमको कंट्रोल करूंगा तुम्हारे इमोशंस को. Care anyway. So even that one question which was in IR, that was taught in the GS mains class. Tell me, wetland is part of environment, I agree. But wetland is very much part of geography. And when the question on wetland is on wetland and locations, it has to be geography. Why to categorize it as environment? It hurts me. So it looks like, the whole coaching world and the teachers are all conspiring against this great subject, demeaning it and showing to the student community, the freshers, the newcomers, that geography has a very small role to play in PT. वो इतना दिखाते हैं यार, मक्खी नहीं दिखा रहे हैं वो. So, do your optional and you will realize that how 35, 40 questions you have been able to capture in the PT. And I tell you one fact, how people have been talking about geography. देखो, from geography 40,000 people will fill the form. ये मैं सबको आजकल खूब बताता फिर रहा हूँ. जहाँ मौका मिल रहा है बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि देखो देखो ये डेटा है. So 40,000 people applied with geography. 40,000 people applied with, say, Hindi literature. हिंदी लिटरेचर का एक बहुत बड़ा मदारी आ गया है मार्केट में. उसके बीन पे बहुत सारे नाग नाच रहे हैं. खैर, लीव ऑल दिस. दोनों से अपीयर हुआ. पीटी में रिजल्ट आया 280, 238 है शायद. यहां पे आ गया 3000. अब फाइनल सक्सेस लिस्ट में दिस इज 150 एंड से दिस इज 20. बताओ, ये तो बोलेगा 5% रिजल्ट है. ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा ना 14% रिजल्ट है या नहीं? दैट इज व्हाट इज बीइंग प्रोपेगेटेड.
So when you have opted for geography, the first barrier, that is prelims, देखो, there is no crowdiness at the PT level. People opting for geography, optional, are very less. की बात समझा? There are more people opting for anthropology these days and sociology these days and even PSIR. लोग ज्यादा वो ऑप्शनल ले रहे हैं भाई. 1 लाख लोग हिंदी लिटरेचर लेने वाले हैं. नागिन डांस चल रहा है. मैं तुमको एक चीज बताता हूं. There was a video which got viral. I am a Hindi medium teacher also, you know it? I am proficient in both languages. I was an English medium teacher. I stayed in Hyderabad 2 years. I came to Delhi and then there was an offer. The money was good. ALS, they asked me if you can teach independent batch in Hindi medium. So I took that kazil, I took that responsibility and I jumped into that project. I did well. So now dekho, there is a typical video going on in the market. Mayank, कोई देखा है? Geography से है. Actually, the real Mayank is DSP in Amethi. He was my student from Hindi medium. He scored 305. उसको 305 मिला था. And that Mayank, which was shown in the interview, he is also my student. But he changed from geography to Hindi literature. And he himself is telling that I scored 260. तुम लोग देखना उसको. वो कह रहा है कि ज्योग्राफी मुझे 260 आया है. और इस बार उसको हिंदी लिटरेचर में भी 260 ही आया है और मे बी 5 marks less. लेकिन how these videos are created, how they are thrown in the market, that everyone, the Mayank who has scored 305 has taken Hindi literature. I mean, this profession to some has no ethics. They are hell-bent upon piling numbers, misguiding people. You are at the right place. तुम सही आदमी के पास आए हो. प्लेस भी सही है, आदमी भी सही है. अब परसेंटेज का तो यही ड्रामा है ना, और क्या है. जियोलॉजी में मान लो 1000 केम, यहाँ 50 लोग क्वालिफाई किया, 10, कितना परसेंट रिजल्ट हो गया? 20. दिस परसेंटेज रिजल्ट डजंट मैटर एक्चुअली. बताओ, why the number of people are more writing mains with geography? क्यों लिख रहे हैं? Is the crowdiness in geography is more? No. Is geography overcrowded? No. What is overcrowded is sociology. Top teacher in geography is teaching 200 people. And 3rd, 4th, 5th rank teacher in other subjects are teaching 300 people. तो crowdiness geography में कैसे है? नहीं है. Crowdiness PT में है, मेंस में है. क्यों है मेंस में? क्योंकि वो जो बैरियर है ना PT का, वो ज्योग्राफी का पावर तोड़ता है. अच्छा, आई एम टेलिंग यू वन मोर सीक्रेट. रैंक 22. He was my student, Hindi medium. He also changed from geography to Hindi. Any result coming from Hindi literature, they all are my students who got converted into a different religion. This in secular world. अच्छा, क्या हो रहा है कि everyone is thinking that, oh, if you take Hindi literature, you qualify. अरे यार, because he was geography optional student, so he could push this barrier and then he could cover 500 marks in GS mains also. He could speak a bit more because of the knowledge of geography in interview. This is why he qualified. He didn't qualify because of Hindi literature. ये क्या कोइंसिडेंस है बताओ कि जो भी हिंदी में रिजल्ट आया वो सब मेरा स्टूडेंट है जो कन्वर्टेड स्टूडेंट है और मयंक के नाम पे कन्वर्जन चल रहा है. खैर छोड़ो. सुबह सुबह हिंदी मीडियम का एक बैच था तो उसमें मयंक इज राइटिंग टू मी ऑन माय व्हाट्सएप कि सर आई एम डीएसपी अमरोहा और मैं okay, coming to the point. So I hope the first lesson which you learned today is that the role of geography in PT. समझ में आया?
Geography is going to resolve the minimum of your 35 to 40 questions, I'm telling you. Some questions which look like coming from economy, they are from geography also. Geography is an interface. No, geography is multidisciplinary. Go through the syllabus of geography. You will find that environment, climate, agriculture, resource, trade and transport, settlement, women, globalization, contemporary issues, disaster management, सब भर दिया. Soul of UPSC syllabus is geography. Today you are going to do one exercise. Your exercise will be looking at the syllabus of geography. करोगे? And every, ऐसा नहीं ऊपर देख लो oceanography. नहीं, you have to go through. उसमें लिखा है ना sea level change, marine pollution, law of the sea. उसको देखो. Questions are being drawn from those lines. Law of the sea, marine pollution, coral reef, coral bleaching. This is your syllabus of optional. Now there was a question on coral also in PT. देखा? कहाँ से आया वो? GS? अरे भाई ऑप्शनल में है वो. ऑप्शनल का लड़का के लिए क्या है वो? खेल है, खेल. बोला ठीक है. He will have a different level of confidence because coral bleaching we are not studying like 5 facts on it. We are going into the coral है कौन, coral कैसे shell बनाता है, कैसे food बनाता है. We go to such depth. So any question coming from our syllabus, optional syllabus, you will have the confidence to do it. There was a question from cloud, nahi? And people were hell bent upon taking it into the साइंस सेक्टर. मैंने कहा ले लो भाई, ये भी ले लो, एक लुटे हुए आदमी का लंगोट भी ले लो. बोल दो ना कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया. आई एम हैप्पी. खैर, those who had this geography optional, they know it deep inside that I could have done 40 questions from geography optional. उसको पता है कि हम 40 कर सकते थे. That's the role of geography in PT. And the second myth which is about geography is that a lot of people take geography. ऐसा कुछ नहीं है. Very less people take geography. People with science background, engineering background, people with geography background, they only opt geography. बाकी जो लेने वाले हैं वो तो सब एंथ्रो PSIR भाग रहे हैं लोग वहाँ पे. Okay, second point, want to clarify. Geography has a vast syllabus. It's very difficult to cover up the entire syllabus. ये myth है तुम्हारा. मान लो कि there is a subject called X and this is your geography. So in X, say you have 100 units and geography में you have low year 200 units. Syllabus का weight 200 kg है. 200 units है इसमें और उसमें 100 units है. Geography का syllabus vast है. मैंने कब मना किया नहीं है. But this 100 units में in GS you can use 10 units, and if you have Hindi literature then you can use 0 units. I'm not against Hindi literature. My mother is a professor in Hindi and I love my mother, so I love Hindi literature. Conclusion निकला ना. डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं है हिंदी लिटरेचर से, बट माँ की तरफ से तो है ही. एंड शी विल रीड ऑलवेज कामाहिनी, उर्वशी. अब हिंदी में रहता क्या है? रोमांस, रस, भाव, प्रेम. अब हिंदी का लड़का मस्त है उसमें कथा सुन रहा है. वो आपको अनप्रैक्टिकल बना देता है, बिल्कुल ड्रीमी बना के छोड़ देता है, पूरी जिंदगी के लिए निकम्मा. लेकिन क्या करें, आजकल मेरा कोई सुनता ही नहीं है. तो 100 यूनिट्स है, इसमें 200. सो ज्योग्राफी सिलेबस इज वास्ट, एग्रीड. बट ज्योग्राफी का जो कोर है ना, दैट इज ओनली 15 यूनिट एंड 150 यूनिट्स विल बी यूज्ड इन योर जीएस. समझा क्या? कैन यू डू योर जीएस विदाउट लर्निंग एग्रीकल्चर दिस डेज? There was a question on crop diversification in GS mains.
an optional teacher of geography always teaches crop diversification. मैंने पढ़ाया था पहले ही, क्रॉप कॉन्सेंट्रेशन, क्रॉप डेंसिटी सब पढ़ाया था ना. क्या आया? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आया. इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं पढ़ाता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन मीनिंग द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रॉप, द एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रॉप. And the moment you are learning locations and distributions, that is the domain of geography, not of any other science. सुना क्या? नहीं सुना? अरे ज्योग्राफी का जो डोमेन है ना वो लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन was asked in paper 3 GS. The solution doesn't lie with economics, it lies with geography. अब बताओ एग्रीकल्चर, biodiversity, environment, disaster management, resource, industry, regional development and planning, settlement, urbanization, migration, demography, population. मैं थक गया बोलते बोलते. ये सब कहाँ है? यही तो पढ़ना है यार. या तो तू भाई जीएस में पढ़ ले या ज्योग्राफी में पढ़ ले, कहीं तो पढ़ेगा. तू उसको तोड़ तोड़ के बांट दे. तू बोल कि मैंने इंडियन सोसाइटी पढ़ा. मैं कहता हूं कि भाई तू ज्योग्राफी में पढ़ लेना, सोशल ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस है? आई एम टीचिंग द सेम टॉपिक, सेम सब्जेक्ट, विथ सेम फ्लेवर, मे बी मच ग्रेटर डेप्थ, विथ मोर डेटाबेस, because we are students of geography. So as you become a student of geography, you don't have to read separately environment, separately agriculture, separately Indian society, separately इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स. हाँ, इकोनॉमिक का थ्योरेटिकल पार्ट हम नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे. जीडीपी क्या है ये मेरा थोड़ा ना काम है. लेकिन जीडीपी इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नॉट. यस, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन द क्लास. समझे? जीडीपी भी आता है. 2 questions have been resolved. पीटी में रोल है, एग्रीड. Syllabus is not vast. Syllabus में whatever extra you find, they are essentially part of your civil services preparation. Can you tell me even one topic? I'm challenging you. Tell me even one topic from the geography optional syllabus where you will have a wasteful effort. तुम बताओ कि एक टॉपिक भी ज्योग्राफी का अगर वेस्टफुल है तो मुझे बताओ. सेटलमेंट ज्योग्राफी में क्या लिखा है? इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी. नहीं. पॉपुलेशन में क्या लिखा है? ट्राइब, रेस, रिलीजन, सेकुलराइजेशन. देखो सिलेबस जा करके. तो इफ यू प्रिपेयर योर ऑप्शनल वेल, दिस हाउ I told my last batch also and telling you also that I will be covering up your 1000 marks and 30 to 40 questions in PT. समझे? So once you have joined geography optional, you have to keep in your mind that syllabus is not vast, and whatever maybe अगर मान लो some optional is getting over in 3 months, 3.5 months, we are getting it over in 4.5 months. Why to blame for 15-20 days extra effort which you have given to the optional? Now there is a rumor, अरे यार बाकी optional 4 महीने में होता है, geography 5 महीने में होता है. मैं कहता हूँ हाँ होता है. तुमने जो 1 महीने का एफर्ट दिया, was it wasteful effort? अरे क्या मैं कमाई नहीं पढ़ा रहा था? रस नहीं पढ़ा रहा था ना? अरे तुम्हारा ही टॉपिक पढ़ा रहा था ना यार. तो तुमको प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा इंडियन सोसाइटी पढ़ाया मैंने, इन्वायरमेंट पढ़ाया मैंने, रिसोर्स पढ़ाया, इंडस्ट्री पढ़ाया, तो तुम क्यों परेशान हो? तुमको हैंडआउट्स दिया, यूपीएससी का सिलेबस पढ़ाया, फिर भी तुम कह रहे हो कि हाफ एन मंथ एक्स्ट्रा लग गया, 40 डेज एक्स्ट्रा लग गया. यू आर गिविंग वॉट एवर योर एफर्ट्स आर कंज्यूम्ड बाय दिस सब्जेक्ट, बाय दिस ग्रेट सब्जेक्ट. इट इज नॉट यूजलेस, it will be used somewhere. कहीं न कहीं जिंदगी में भी काम आएगा. I was on a travel for last 8 days, so I was living with my geography. मैं ब्लॉग बनाता हूँ, डालने वाला हूँ. यही घटिया सा मोबाइल से ऐसे करके.
शौक है मुझे, मरने के पहले अपना ब्लॉग खुद बैठ के देखेंगे, तुम भी बनाओ। चलो, ओके। नाउ something which I might look repetitive to many people, but I know some people are very fresh and new. So I want to make another point to you that when you go in the interview board, interview में जब जाते हो, तो interview में what is the likelihood of, what is likely to be asked? What will be the first question? From your biodata? तुम कौन हो, यही ना? Your district, your place of birth, your education, यहीं से पूछते हैं ना? Generally the question is around how do you propose to develop your own district as an IAS officer? This is a very common question. That is where interviews begin. Even last year the interview was going on, I was on a survey. I was talking to them, क्या पूछा? What was the first question, बताओ? Nobody ever thinks about the first question in the interview. मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े interview के mentors, they ask the key questions. But what matters is the question number 1. It actually matters. And the first question will be on your biodata. And the first question will be on some kind of developmental aspect of your village or your district or your town or your place of birth. ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं वो. Answer lies in geography. कैसे? How do you propose to develop your district? क्या करोगे? A, either industries, so you have to know about the resources of that area. नहीं. Then problems, hazards, क्या disaster है, urbanization का क्या problem है. So all the development aspects, finally it becomes a question from geography, and a geography student is more fluent. The first question जो पूछा जाता है उसमें your fluency, and once you respond to the first question confidently, then you get that momentum going. समझे? And once that momentum is there, momentum अगर आ जाएगा, तो फिर your interview will be relatively good. But when in the first question you are क्या stammering and you have no idea, you are talking fringe things, तो इंटरव्यू में तुम्हारा कॉन्फिडेंस विल बी लो. नाउ इन ज्योग्राफी, इफ यू मेक ए लिस्ट ऑफ व्हाट ऑल क्वेश्चंस आर आस्क्ड, वी आल्सो टीच जियोपॉलिटिक्स. वी हैव ए टॉपिक ऑन पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द ऑप्शनल. डू यू नो दिस फैक्ट? वी हैव पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, तमिलनाडु वर्सेस कर्नाटका, कर्नाटका वर्सेस केरला, कर्नाटका वर्सेस महाराष्ट्र, वो बाउंड्री के पास एक है ना, बेलगांव डिस्प्यूट. तो ये सारा डिस्प्यूट पढ़ना है. अच्छा, रिवर वाटर डिस्प्यूट, इंडिया एंड साउथ एशिया, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, गुजराल डॉक्ट्राइन, मतलब पूरा IR पढ़ना है. इंडिया एंड द जियोपॉलिटिक्स, इंडियन ओशियन एंड द जियोपॉलिटिक्स, इंडिया एंड द वर्ल्ड. यू आर गोइंग टू रीड द सिलेबस टुडे. रीजनलिज्म, नेशनलिज्म, ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ये सब पढ़ना है. इसीलिए ज्योग्राफी का सिलेबस विल लुक वास्ट कि यार क्या क्या सब पढ़ना पड़ रहा है. बट देयर आर ऑल यूजफुल थिंग्स. इन योर इंटरव्यू आई एम टेलिंग यू, इफ दे आस्क 10 क्वेश्चंस, योर ज्योग्राफी विल हेल्प यू इन 6 to 8 क्वेश्चंस. 6 से 8 क्वेश्चंस में ज्योग्राफी हेल्प करता है बोलने में. तो एक ट्रेंड तुमको मिलेगा. People who had geography optional, their interview marks are never less than 160. Check out. Go and check out. किसी से चैलेंज करता हूं तुमको, ये तुम करके देखना कि इंटरव्यू मार्क्स उसका कहां स्टैंड करता है. एंड ऑल्सो चेक आउट फॉर हिंदी लिटरेचर. कह रहे तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बट ऑब्वियसली यस. ओके, नाउ this was the initial talk which I wanted to. If you have any confusion about geography as an optional, ask me. Otherwise, allow me to go with the planned classes and all. You still have questions. इतना बोला तब भी questions है. ऐसे में तो बहुत रोल है. हर ऐसे ज्योग्राफी से ही है. Seriously, ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल थॉट का एक पोर्शन है, थिंकर्स का एक पोर्शन है ना.
उसमें क्या होता है मैं बताता हूं तुमको. द थिंकर्स पोर्शन ऑफ ज्योग्राफी विल हैव ह्यूमनिज्म, वेलफेयरिज्म, मार्क्सिज्म, बिहेवियरलिज्म, आइडियलिज्म, रेडिकलिज्म, चेक करो, डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म. Syllabus is such that it has written most of the philosophical trends of the current world. The world is governed by welfareism today. आपको पता है अमर्त्य सेन got his Nobel Prize for what? क्या? Welfare economics. His Nobel Prize was for welfare economics. So welfareism is the current. Any question in essay you feel. ऐसे में सुनो ध्यान से, ऐसे में you feel, you believe that question has come from ethics. There is no subject like ethics. It comes from the either psychology background or from the what? Philosophical backgrounds. So if you learn 10 philosophies, जो philosophy होता है, human science का philosophy है, उसको अगर याद रखते हो, तो it will help you in writing so many essays. It will help you in writing even some of the parts of ethics also. क्या छोड़ो, your question. Role of current affairs in geography is very minuscule. They look like coming from current affairs. The structure of the question is like, oh, this has been asked from current affairs. But question actually comes from hardcore geography. And this is the reason the hardcore geography was lost because of the current affair hangama. Paper 2 questions, I will love to take the questions and discuss with you. Like I am taking one question, all of you concentrate. There was a question on a smart city. So everyone said current affair. Already we were teaching a smart city model of grid iron pattern, Chandigarh. Chandigarh a smart city hai ya nahi? It was not a new concept. In geography, the topic is urban morphology, urban structure. So we study urban structure, urban morphology. Now in the urban morphology, we have grid iron pattern. So if someone is going to write on a smart city with the perspective of Narendra Modi sir, या योजना से उठा के लिख दिया, तो geographers will not agree to it. समझ में आया? मान लो there is a question on a smart city, you are writing whatever facts were given in योजना. तुमने पूरा current लिख दिया. Without relating the smart city concept with the grid iron pattern theory of geography, you will not get marks. समझ में आया क्या? So geography में stick to the core and current affair is like pudding on the cake. लेकिन जो base होगा आंसर का, that will be hardcore traditional geography. अच्छा, tell me one thing. The professors of the universities are going to check your copies. वही होगा ना? या कोचिंग वाले होंगे? नहीं ना? We are not invited. We are the most hated community for UPSC. ये सच है. हालांकि जब यूपीएससी चेयरमैन के बेटा का जब तैयारी करना होता है तो ही ज्वाइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट. टीरा ढाबी वाज रैंक 1? नहीं. पढ़ा लेती अपनी बहन को भी. नहीं पढ़ा पाई ना. शी ऑल्सो ज्वाइन 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. She was also running around for coaching material. And when you become IAS, then you take a mic and say, it was my effort and hard work. और कोचिंग वाले को 10 गाली दो. समझ गए? फिर उसकी कोई बहन का इंटरव्यू होगा, फिर कोचिंग में ज्वाइन करो. तो कोई बात नहीं है. खैर, coming to your point, current affair is, as I told you, is pudding on the cake. So in geography, optional in particular, whatever questions they resemble, एक question और ले रहे हैं question, okay? जैसे there is a question on the triple transportation system. Now, seen from current affair perspective, this question will have triple transportation system, meaning the roadways, the railways, and the airways. समझा? Navigation नहीं, airways. This is called triple transportation system. Now in triple transportation system, if you are going to write on airways, airways, O-ways, you will not get full marks.
But the moment you present a geographical model on it, तुम अगर इसमें present कर दो locational analysis model, then it becomes geography. समझा है नहीं? So core will be the locational model by Haggett. Haggett ने locations पे model बनाया हुआ है. So present that Haggett's model and then put that pudding on it. तब बताओ कि मोदी का plan क्या था और triple transportation में what all are included. So a combination of the hardcore geography, because what is pleasant to the eyes of a professor? Think of it. What is pleasant to the eyes of a professor? The geography, the hardcore. हम वो पढ़ाएंगे तुमको, वो hardcore. हम लोग geography के ही आदमी हैं, ऐसे समझो. हम लोग geography ही पढ़े हैं. हम लोग वो सविंदर सिंह पढ़ के पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं. तो समझ गया ना? Your question answered. I'm not saying that there is no role of current affair, but current affair का role will be hardly 20%. 20% is the role of current affair. 80% will be your hardcore geography. All right? जैसे some questions will look like current affair, but they are not current affair. जैसे example, resource mobilization. Question आ गया geography optional में, GS में भी आया. आया resource mobilization. Now everybody is thinking resource mobilization is a current theory. अरे नहीं भाई. Resource mobilization theory was given by Indira Gandhi. Resource globalization, resource mobilization, resource curse theory. बहुत सारा theory है resource पे. तो all should be taught as part of traditional geography. And then you will be realizing, then yes, I agree, there are certain websites where you will find, जैसे मान लो term is urbanization, but question could be asked on suburbanization. नहीं, the questions could be asked on ultra-urbanization, hyper-urbanization. Now this new vocabulary is found not in the books, but on the government websites. Now you can ask my old batch students that I have given them ample material copied and pasted from the websites. If UPSC asked on hyper-urbanization, there are 10 more terms in the same Government of India paper. So that paper was taken out, converted into handouts, distributed to the students. Because these concepts are not very difficult. What is hyper-urbanization? Simple example. They say Delhi is having explosive urban growth. No, because it has more economic opportunity, so people are migrating here. And the fringe area, the NCR area is becoming denser. The cheaper lands are being sold out. Builders हापुड़ तक बना दिया सब. हापुड़ पता है? पूरा सोनीपत कुंडली तक चला गया दिल्ली. लोग वहां खरीद रहे हैं प्लॉट्स और जमीन और फ्लैट. इस हाइपर अर्बनाइजेशन, ये सिटी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखा रहा है. समझा? ये सिटी का बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं है. तो अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम है ये. This is not a good sign of the growing Delhi, because this is haphazard urban growth. So the government presented some 10 terms. It flashed on their websites. So I will be giving you some idea on websites also. मैं अपना research करना मेरा काम है. And I will be giving you the handouts also. देखो handouts भी मेरे पास है. नहीं देखो, this is a workbook. I will be giving you workbook. जैसे इंडिया फिजिकल है ना? इसमें वर्कबुक है. The questions are printed. दिखा? And यहाँ क्या करना है तुमको? यहाँ लव लेटर लिखना है. समझा? Fall in love with geography. It's time now. And you have to write here. So practice पूरा workbook बनाओ. Workbook was my idea. 3, 4, 5 years back I applied it. अब ये I think it has extended into some other parts of. देखो क्या क्या क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है. रिट्रीटिंग मॉनसून एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर. समझा? UPSC is not about asking direct questions कि what is retreating monsoon, what is southwest monsoon. ऐसे नहीं पूछता है. What are the humanizing factors which modified the rainfall pattern of Indian monsoon?
ले, ऐसा क्वेश्चन आएगा, समझ गया? So these questions are not found in the books. These questions will be found here in your workbook. So there is an idea of workbook for you. I will be completing Oceanography. You will be handed over with a workbook. You have to write all these 50, 70, 100 questions and then show it to me. हम देखेंगे तुम क्या कर रहे हो उसमें. So there is an idea of workbook in your course. ये समझ में आ गया? Okay. Then geography is thought to be little difficult sometime because of two reasons. A, the location part. Why students hate geography? Because of two reasons. Reason number one is location, map locations. अब बोल दिया कि इंचुंग रिवर, अब you are troubled. जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लो I am explaining what is plate tectonic theory. And in plate tectonic theory, I'm explaining you island arc orogenesis, या how the islands are formed. Island कैसे बना? And there I give the example of, say, the Kurile Islands. So the concept of island formation was easy to learn, but what causes you the concern? What caused that concern? Kurile, अरे यार ये Kurile क्या है? ये Kurile कहाँ है? वो पिक्चर नहीं बना, तो you will blame on geography. समझा? तुम क्या करते हो? ज्योग्राफी को ब्लेम करते हो, लेकिन ब्लेम कहाँ करना है? Your lack of knowledge of mapping. So map location will be little challenging for you. So as I told you, where you will struggle? A, map locations. So I'll tell you the method of how to look at maps and how to do it. India mapping, though I will be doing myself. We'll have some 5 to 6 days class on India mapping. Every location of India will be pointed out in the class. And I will be giving you a booklet on the locations also. All the locations pointed out. ठीक है? पूरा एकदम spoon feeding कर देंगे तुम्हारा. लेकिन याद रखो कि you are looking for a fish. And I am one who believe in giving you technology of fishing. समझ में आया? So don't collect fish from the class. टेक्नोलॉजी भी सीखो. मान लो कि महाराष्ट्र का मैप मैंने बहुत अच्छा करवाया, कर्नाटका का तुम अच्छा करो ना. मैंने कर्नाटका भी करवाना है, ये मत सोचिए कि लगता है नहीं करवाएगा. देखो तुरंत कॉन्वर्सेशन आया, मुझे करवाना है लेकिन तुम टेक्नोलॉजी सीखो. तो तुम उसमें, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट, द मोस्ट ड्रेडेड आइडिया which becomes a concern for geography student will be the mapping and map locations. So I will have a special session on mapping today itself. आज मैं समझाऊंगा मैप कैसे करना है. Second concern will be the vocabulary. Vocabulary is another concern because in geography we don't use simple terms. मान लो कि बोलना है कि this area has height and depth. तो geography student should write the terrain has undulating relief. कुछ नहीं है, उसका मीनिंग क्या निकला? कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट है क्या यहाँ पे? Okay, look, ask her or her. What geography does? Geography converts a simple English into Greco-Roman, into Latin, and that is what creates trouble for the student. But I'm suggesting you, I can have both ways. I can take classes by oversimplifying geography. But दो चीज बताना है, ध्यान से सुनना, बाद में क्लेम मत करना. When I explain, language will be very simple so that you can understand. But when I dictate, because on every topic I will dictate or I will give you my handwritten notes. दोनों काम करेंगे. समझ में आया? So you have to write and prepare notes in the class itself. I will not be leaving anything on you because I really don't trust you. And I seriously doubt your abilities. तो तुमको क्या करना है कि क्लास में ही सारा नोट्स बनाना है. जैसे मान लो सी लेवल चेंज है, डेफिनेशन कहां से लिखोगे? मैं लिखवाऊंगा. समझा?
सिलेबल चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, कैसे लैंग्वेज में लिखना होता है, ज्योग्राफी का वोकैबुलरी क्या है. बिकॉज प्रोफेसर साहब जो चेक करेंगे ना, ही वांट टू सी योर राइटिंग, ज्योग्राफिकल राइटिंग है नहीं. वो तुम्हारा शेक्सपियर से इंप्रेस नहीं होगा. तुम्हारे अंदर के शेक्सपियर को किल करो, ज्योग्राफर को उठाओ. एनी फ्लावरी लैंग्वेज, एनी पोएटिक लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्टेबल इन ज्योग्राफी. Geography does not use the language of newspapers or the colloquial language which we use. Geography uses its own vocabulary. जैसे मैंने बताया ना, भी क्या एग्जाम्पल दिया था. सिंपल सा है ना कि दिस सरफेस हैज हाइट एंड डेप्थ. बोलना इतना ही है. तुम क्या बोल रहे हो? दिस टेरेन हैज अनड्यूलेटिंग रिलीफ. तो स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते लगता है पता नहीं क्या हो रहा है यार ये. तो आई हैव प्रिपेयर्ड ए डिक्शनरी ऑल्सो. देखो कितना बढ़िया प्रचार कर रहे हैं. लगता है इससे ज्यादा एडमिशन होगा. डिक्शनरी पे इतना खुश हो गए तुम लोग. इसमें देखो सारा दिया हुआ है विद डायग्राम्स, द वोकैबुलरी, योर कंसर्न्स. As a teacher, I fully understand what could be your concerns. Your most important challenge is, you know what, sir, I understood, but I don't know how to write. Second question, sir, from where to begin? How to begin? ये क्वेश्चन इतना कॉमन है सिविल सर्विसेज में. उसका सॉल्यूशन है ना मेरे पास. वो सेशन कल करेंगे कि हाउ टू बिगिन, हाउ टू राइट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू यूज योर वोकैबुलरी, हाउ टू राइट थिंग्स इन नॉटशेल, व्हाट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग, हाउ टू इम्प्रेस द एग्जामिनर. ये सब चीजें काम करती है. समझा? आज ही एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट केम टू सी मी इन नॉर्थ दिल्ली. देर ऑल SDMs, आशुतोष यादव, कृष्णा यादव, एंड द सेम Mayank. Mayank was on video call. So Ashutosh Yadav has become SDM. He was the junior most. His handwriting was extremely good. In UPPCS mein he got around 290 in geography. Mayank got 265, and Krishna, who was the best learner, he got 255. किसको नंबर ज्यादा आया? One with better handwriting. नहीं समझा? तुम लोग को यही सब समझाना है मुझे. योर नॉलेज, योर कॉन्सेप्ट, योर एनालिसिस, एवरीथिंग इज गुड, बट अंटिल यू हैव द बेस्ट ऑफ हैंड राइटिंग्स एंड द बेस्ट ऑफ लैंग्वेज, यू विल स्टिल स्कोर लेस देन अदर्स. अब कितना लोग डर गया कि मेरा हैंड राइटिंग ठीक नहीं है? हाथ उठाओ. ठीक करवा देंगे. कुछ नहीं होता है, सिर्फ यू हैव टू लर्न. देखो हैंड राइटिंग में दो ही चीजें होती है, वर्टिकल and the horizontal. समझे? So when you are writing A or B or C, B का टांग ऐसे खींच दिया तुमने तो हैंडराइटिंग सुंदर नहीं होगा. B का लाइन स्ट्रेट करो तो वर्टिकल्स में लिखोगे, हैंडराइटिंग सुंदर हो जाएगा. आई हैव एवरीथिंग विथ मी, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको. टुडे इज नॉट द डे ऑफ कोर्स, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स वेयर यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस. अच्छा, कितना लोग समझा कि ओनली लर्निंग ज्योग्राफी इज नॉट एनफ. देयर इज अनदर चैलेंज दैट यू हैव टू राइट, यू हैव टू प्रेजेंट इन ए ब्यूटीफुल वे. नहीं? एंड वो चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और उस पर भी काम करेंगे. देन देखो, आई हैव मेड अनदर बुकलेट, कॉन्टेम्पोररी क्लाइमेटोलॉजी. दिस इज नॉट, ये जो करंट अफेयर का कहाँ गया ये देखो इसके लिए है. दिस फॉर यू. जो लोग करंट का हंगामा करता है ना, उसको हम ये बुकलेट पकड़ा देते हैं. ले पकड़, ये पिछले 2 साल का सारा हंगामा इसी में है. सो दैट यू कुड, तुमको कॉन्फिडेंस हो. देखो एक बात सुनो, यू आर गोइंग टू फाइट फॉर योर कंट्री, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द चाइना. नो मोर पाकिस्तान, चाइना. चाइना तो खुद ही मर लेगा कुछ दिन में. सॉरी, पाकिस्तान खुद ही भूख से मर जाएगा. देखा ना श्रीलंका को, बड़ा अकड़ में था, चाइना रेलवे दे दिया, चाइना ये कर दिया, अब मर. तो पाकिस्तान छोड़ो. मान लो ही इज ए फाइटर फाइटिंग फॉर योर कंट्री. नाउ ही इज इक्विप्ड विथ AK-47. He will fight, but then he should also have some pistols, some chaku,
सब चीज इसको मिलना चाहिए या नहीं? जल्दी बताओ, क्यों मिलना चाहिए? तो AK-47 तो दूसरा बुकलेट है, कहां गया वो? ये देखो, ये क्लाइमेटोलॉजी, ये AK-47 है तुम्हारा। और जो कॉन्टेम्पोररी वाला है बुकलेट, वो क्या है? तमंचा है वो। और जो डिक्शनरी है क्या है वो? चाकू। तुमको पूरा इक्विप कर दे रहे हैं, लड़ना तुमको है भाई, हम तो पीछे हट जाएंगे लास्ट में, तुम भिड़ जाओगे। तो माई आइडिया इज इक्विपिंग यू विथ एवरीथिंग, गिविंग यू एवरी सजेशन. I can tell you that we are very important. We played important role in your lives. We are the last teachers. I will be your last teacher. तुमको जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, फिर टीचर नहीं मिलेगा, समझा? और तुमने जितना टीचर देखा बहुत अच्छा देखा, लास्ट टीचर देख लो ठीक से, देखो इसके बाद टीचर नहीं मिलने वाला है तुमको. तुम IAS बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, टीचर नहीं मिलेगा. और Sachin Tendulkar, at the age of 34, he started getting bowled for 0, है ना? उसका स्कोर बनना बंद हो गया था, remember? तो he went to whom? The aging archraker, aging almost on the deathbed. Tendulkar went back to him, Guruji बोले अब याद आया बेटा, but I was watching you all these 4 years. You should have come 2 years before. He told him that you are now aging, so your reflexes are poor, and your reflexes are poorer by few seconds only, fraction of seconds only. You are trying to play the same shot. तुम फिर अभी वही ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, लेकिन you are late by a fraction of second. So you are getting out. Do one thing, play with a straight bat. So Tendulkar started playing again with a lighter weight, lighter bat को हल्का bat लिया, and then he started playing a straight. He got 2-3 centuries. This is what a guru can do to you. He knows everything about you. समझे? समझ रहे हो ना? मेरा respect करना पड़ेगा. And I am very useful. Once your PT, you have qualified PT, then I am more useful. You got to understand that teacher cannot deliver his 100% in a class. समझा क्या? Is it possible that I came and I delivered all the 100%? No. I can deliver 40-60%. A great teacher can deliver 60%. But 40% जो मेरे अंदर है, वो तुमको लेना है. Don't grow arrogant. तुम हमसे arrogance मत लड़ाओ, because you can go on internet and search little more things. Just because in the whole notes of 1000 pages you found that one line is wrong, so you started abusing your teacher. That is what this generation does. Emotional नहीं होना है, समझना है मैं क्या कह रहा हूँ. All I am telling you that I am very useful even after the classes, and I love to. I'm having a Zoom meeting with my old batch. ओल्ड बैच से पैसा तो नहीं आएगा ना, अब पैसा मिल गया उसका, बट आई एम स्टिल कनेक्टेड टू द ओल्ड बैच. तुम लोग को मिला इन्फॉर्मेशन? हाँ, जूम बैच का देखो, पिछले बैच से जूम से आज मुझे 9:30 करना है सेशन. क्यों करना है? उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको पुश करने के लिए. उसमें बहुत लोगों का पीटी नहीं हो रहा होगा, समझा? एंड ही मस्ट बी प्लानिंग कि क्या करूं, बिजनेस कर लूं क्या? उसको मोटिवेट करना है. So teacher is not always required for your geography, is required for many more reasons. The swings which you are getting, the mood swings which you are having, the uncertainties which are prevailing in your mind. So I tell you that I am more useful even after the classes. So continue to be with me once the course is over. ऐसा नहीं कि 1 नवंबर के बाद 15 नवंबर के बाद तुम्हारा काम हो गया, बिल्कुल नहीं. And then my WhatsApp number will be with you. You can ask me any question. कभी भी पूछ लो, रात को 2 बजे भी पूछ लो, आंसर आएगा अगले दिन. और that too in voice recording. मैं voice recording में आंसर कर दूंगा, ठीक है ना? तो you will be in touch with me also. As a teacher I am always there. You have seen the study material and my plan of, देखो ये handouts है, minerals and energy पे handouts. Handouts क्या है ये तुमको दिखाते हैं, देखो.
जितना करंट डेटा, मैप लोग, जो भी तुम कहाँ गया वो करंट वाला, लुक दिस इज फॉर यू, योर पैकेज। ये देखो क्या है, ये यहाँ पे क्या लिखा है, सब लिखा है ना, माइका, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, सारा मिनरल लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ मिलता है, कितना प्रोडक्शन है, तुमको जो पढ़ना है पढ़ो। My idea is that you should not feel the scarcity of material. अरे यार वो कहाँ आएगा, वो कहाँ मिलेगा, everything is with you. ये सब तुम्हारा. Even on regional development and planning, look at the size of the handouts. इतना thick. This is other than the booklet. ये booklet नहीं है. ये booklet है क्या? ये booklet नहीं है. अब देखो इसमें there are Indira Gandhi Canal Command Area Development Program. It is not mentioned in the syllabus, but yet the case study is given. समझा? Because case studies are very very important. GS में क्या पूछता है कि इंदिरा गांधी कैनाल जो है, how it has raised the water level and it has brought green revolution in western Rajasthan. नहीं? And what are the social implications of it? Everything is in this booklet. समझा? How this canal irrigation has led to social unrest. ये समझ में आया? कैनाल इरिगेशन से सोशल अनरेस्ट होता है. क्यों? कैनाल इरिगेशन में विल हैव बाराबंदी, नहीं, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ, एंड देन यू हैव कैनाल्स एंड ड्रेन्स. आज उसने ड्रेन बंद कर दिया, कोई उसमें पानी काट के डाल दिया, फिर लाठी चल रहा है अगले दिन. तो कैनाल इरिगेटेड एरियाज वेयर मोस्टली अबाउट दिस what? The social unrest. तो questions का nature भी कैसा भी होगा, your these booklets are going to cover it. Backward area planning, सब है इसमें. I think this is a fabulous work which was done by my team. इसमें you have Panchayati Raj annual plan, something which you think is part of economics will be part of geography. So this is the whole plan. Achha, let me give you the summary of my course plan. So we'll be starting it tomorrow, not today. Of course, I am not in mood to talk anything on the syllabus subject now. So we are starting tomorrow. We are starting with Oceanography. Samjha? Why Oceanography? Why not geomorphology? Because geomorphology is difficult. As simple as, अब देखो, geomorphology में I teach geological principle. समझा? मतलब my geomorphology is not about the landforms and the structure. My geomorphology is highly scientific. There's a granite, you learn granite. I will tell you how granite is formed and how it is different from andesite. समझ में आया? What is the core material which will form the different rock system? I go in geology. So, if I start the course with geomorphology, then some of you will find it very difficult. And second thing, you have not acclimatized to my style of teaching. Maybe all those who have been in the GS class. How many have not been in the GS class? Raise your hand. This is quite a number. It matters. So you have to acclimatize. So oceanography is the simplest part of physical geography. So we are starting with oceanography. That is one. Then second, booklet will not be provided on day 1. It will be provided on day 2. Day 1, what you have to do? Nahi, NCRT. Day 1 is your self-study on NCRT. So day 1 you will be reading one chapter from NCRT, that is hydrology. Class 11 NCRT, लिख लो, class 11 NCRT hydrology. I think that is the last chapter. Most of you have read it, or so you have to start with hydrology. That will be your chapter number 1. Second day you will get the booklet. अब ध्यान से सुनो, but don't start reading booklets again. अभी booklet मत पढ़ना. हाँ, day 3, 4
start reading booklets. क्योंकि मेरा जो बुकलेट है ना वो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट बनाया मैंने, because I wanted you to learn the language of geography. You got my point? Geography, the booklet has been, some of the paragraphs have been copy pasted from some of the great books. पहले ही बता दिया है. जैसे मान लो कि ग्रांट ग्रॉस है. ग्रांट ग्रॉस इज ए ग्रेट ऑथर ऑफ ओशनोग्राफी. तो ग्रांट ग्रॉस में देयर वाज ए क्वेश्चन ऑन टीएस डायग्राम. घबराना मत, एक डायग्राम था और क्या. So I found that if the question has been asked from Grant Gross, this question has been asked from Grant Gross, that simply means that professors are referring to Grant Gross. हाँ या नहीं? This is the way we discover. Looking at the question, we go into the books. Oh, this book is important. So now from Grant Gross, there are some chapters which have been taken out. Something from T.S. Lal has been taken out. Something from different books have been taken out. Now, I'm telling you, your need for reading books is very minimal. If you want to read books, I will suggest you books, but reading book is not important once you are in the class. And the questions in UPSC are not asked from books. जो यूपीएससी का क्वेश्चंस है ना वो किसी बुक से, बुक के पैटर्न को फॉलो नहीं करता. वो द क्वेश्चंस आर यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल ज्योग्राफी प्लस मॉडर्न ज्योग्राफी प्लस कॉन्टेम्पररी ज्योग्राफी. So they're making a blend of questions. So typically, like there are certain books very popular. Savinder Singh, नाम सुने होगे? But Savinder Singh has become not so useful now. Had it been 2011-12, I would have said, yes, go for Savinder Singh. What a book it is. But after 10 years and after looking at the number of questions being asked from other books, I will not suggest you to read Savinder Singh because अब questions तो नहीं आ रहा है उससे. Last 5 years का trend है ये. एक last year question था modification of air mass. ऐसा एक दो question है अभी भी. But not really the questions are from books. Your book reading, final verdict दे रहा हूँ, final words. Books are not required for you. समझ में आया? With so many of material and so much of writing in the class, you don't need books. But some people who feel like reading books, who have enough time, I will suggest you certain books. And now it's up to you. You want to read them? You can read it. Like for Oceanography, the best book is Wattal and Sharma. D school में professor थे, समझे? Generally D school professors or JNU professors or BHU professors, ये लोग they have made their mark in geography. तो generally we refer to the professors from JNU or Jamia. Jamia से भी books. There have been so many great professors from Jamia also, like so many of them. Quraisi Sahab was there. Book reading is a good habit, but not required for you. But there are certain books which are important. जैसे there is one book, Rupa Made Simple. नाम सुना है? So we have Rupa Made Simple. This is in volume 1 and volume 2. There are two different textbooks. One is Physical Geography and second is Human and Economic. And second is the Human and Economic Geography. So you have two textbooks which are essential. NCERT, class 11-12, new NCERT 11-12. Don't worry about the old NCERT. So new NCERT 11-12 plus Rupa Made Simple. These books are essential. And topic wise, जैसे oceanography है, geomorphology है, तो topic wise I will be suggesting you other books also. ठीक है? But remember that books पढ़ने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है. But still, it's up to you.
डिक्शनरी दे ही रहे हैं, और कितना डिक्शनरी पढ़ोगे? डिक्शनरी में ऑक्सफोर्ड ले लो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रख सकते हो. सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यू कैन कीप विथ योरसेल्फ. Okay, dictionary will not be provided for every topic. जैसे climatology में dictionary was integrated with the booklet itself. किसी किसी में separately है, लेकिन separately में थोड़ा print का बहुत सारा issues हो जाता है, तो it has been combined with certain booklets. ठीक है, but dictionary work will be there. Dictionary मिलेगा. Okay, so we are starting with oceanography tomorrow. That was one. And one very important thing, test will be conducted on every Sunday. Sunday को टेस्ट होगा या सैटरडे कर लें? नहीं, सैटरडे को I may have class. You have been told 5 days in a week, but ऐसा नहीं होगा. You can have 6 days in a week. सब डिपेंड करता है कि कैसा चल रहा है. You can have 7 days in a week also. सब डिपेंड करता है कि कैसा चल रहा है. समझे? So get ready, mentally prepared हो जाओगे कि I have 2 holidays for CP, cannot place, for CCD. तो वो ठीक नहीं है. You have to be. अच्छा, एक दिन तो छुट्टी मिलेगा, either Sunday or Saturday. एक तो हॉलीडे पक्का है. Second holiday will depend upon my discretion, and my discretion नहीं, मेरा understanding of कैसे चल रहा है, course कैसे चल रहा है. So Saturday is a kind of reserve day. Reserve day meaning I can use it. And Sunday will be a holiday or a test day. ठीक है? Tests are very important part of your preparation. I hope you understand this. Test is a very, very important part. I have shown you the workbook also. So working on a workbook is different and appearing in the test is different. उसको मिलाओ मत. Tests are different from the workbook. Workbook में simple questions है. समझ में आया? Workbook में one line question topic है. जैसे लिखा है El Nino and Monsoon. बस. क्योंकि workbook will be like for practicing geography and your knowledge, testing your knowledge. But test will be conducted for forcing you to write and taking out the best out of you. That will be test. So test will be on every Sunday. Test papers are very well prepared now. Last batch में तो I was struggling कि इतना सारा matter बनाना है, सारा booklet revise करना है. I really struggled and there were certain delays also in providing the booklets, etc. But the students in that batch were so humble, they didn't complain about it. लेकिन इस बैच में तो ऐसा कुछ नहीं होना है. इस बैच में तो everything is ready. फर्स्ट चाइल्ड का जो अपब्रिंगिंग होता है ना, उसमें माँ गलत करती ही है. फर्स्ट चाइल्ड को थोड़ा ज़्यादा पिटाई हो जाता है या ज़्यादा प्यार हो जाता है. उसी तरह से है, फर्स्ट चाइल्ड का थोड़ा सा होता है. बट योर बैच विल बी, इट शुड गो वेरी स्मूथ. एंड समथिंग ऑन मैपिंग. कोर्स तो समझ गए. मैपिंग में लिखो, एटलस का नाम लिखो. योर एटलस, हाँ वही है. ब्लैक स्वान इज माई फेवरेट. सो ब्लैक स्वान, Black Swan, and Oxford Student Atlas. A lot of questions coming on Sir, how these workbooks will be accessible to online student? Through courier, simple, or maybe PDF, pata nahi, courier most probably. Sir, how to strengthen mapping? So whatever will be provided to the offline class, same will be provided to the online class. But last year, you know what happened? I gave access to
ऑनलाइन क्लासेस फॉर ऑल द ऑफलाइन बैचेस ऑल्सो। ये सब घर में सोना शुरू कर दिया। क्लास में मैं देखूं तो यार ओनली 50-60 स्टूडेंट्स बैठा है, रेस्ट ऑफ देम कहाँ हो भाई? घर पे सर, आज कमर में दर्द था। ये दर्द कमर बहुत होने लगा लोगों को। तो दिस बैच इज एक्सक्लूसिवली आइदर यू कैन बी ऑनलाइन और यू कुड बी ऑफलाइन। दिस इज ओनली रेमेडी। समझ गए? आइदर यू कुड बी ऑनलाइन और ऑफलाइन। यू कैन नॉट बी ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। दोनों तरफ एंजॉय करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दैट मेक्स यू इनडिसिप्लिन्ड। एंड यूथ जो होता है ना यार, उसको बहुत मुश्किल है उसके एनर्जी को कंट्रोल करना, उसके माइंड के पेस को कंट्रोल करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिक्टेट योर एंड पुट यू इन द राइट पाथ। वेरी डिफिकल्ट। यू हैव बीन ए डिफिकल्ट चाइल्ड फॉर योर पेरेंट्स और नॉट? नहीं, योर पेरेंट्स आर ऑलवेज फाइंडिंग यू द मोस्ट इनडिसिप्लिन, द मोस्ट, अरे यार पता नहीं क्या बिगड़ गया, ये हो गया, वो बोलता है, अब तो तू बड़ा हो गया, ये स्टोरी चलते रहता है। सो ऑफलाइन ऑनलाइन का कोई मिक्सिंग नहीं है, यू आर ऑफलाइन। Okay, but one important thing, I will be providing you, I will giving you access to some 25-30 video classes. This for offline students also. तुमको भी I will be giving you 30 classes. जैसे which classes? Some topics which are very traditional and there is no change, which are not even in the syllabus. But I want you to learn as a teacher of geography to make your geography more comprehensive, more holistic. समझा? जैसे I am giving you one example. There is a topic, Big Bang Theory. Is it part of your syllabus? No. समझा? There is a topic, Geological Time Scale. Geological Time Scale. It's not part of your syllabus. But yet you have to know it, you have to learn it. So those kind of videos, special videos will be provided to you. You are okay with it? And you have to use Saturday and Sundays for those videos. And in those videos, I'm not like that YouTuber आकर के बोले कि हाँ ये है वो है, भाषण नहीं उसमें. It is like classes only. तो उसमें भी you will find that I'm giving you facts in dictation, we are creating diagrams. उसमें भी यही होगा. So they are like classes only. Take them as classes only. You have to take a paper and a pen and then write everything what is told in the class. So your videos will be proper classes. समझ गया? ये मत सोचना कि वो वीडियो हल्के में है, वो पूरा heavy videos है. So treat them as your proper classes. Around 20 to 30, I guess. Okay, any further question if you want to ask? जिज्ञासु बालक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो. मार्केट में ये मीथ चल रहा है कि जो बच्चे ज्योग्राफी लेते हैं वो 300 नहीं लाते हैं. रैंक 9-10 जो है उसको 305-7 है. हिंदी में आ रहा है यार 305. मयंक वाला एपिसोड हिंदी मीडियम में स्टूडेंट लाया. तुम सोचो हिंदी मीडियम में स्टूडेंट 305 लाया, तो फिर तुम क्यों नहीं लाओगे? देखो क्या है ना कि एवरी सब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू ए स्केलिंग नाउ. पहले क्या था कि देयर वाज ए टाइम व्हेन ज्योग्राफी स्कोर्ड 339. समझा? 339 was in geography optional out of 500. Even 339 was scored in other optional also, not only geography. Every optional में 330, 320 ऐसे आता था. So what was happening that optional subjects were determining the ranks. So now the newest strategy by UPSC is to scale down the optionals. And you will find that highest score, whether it is geography or anthropology or sociology, it is hardly hitting 305. So don't think about the highest marks. एक चीज दिखाते हैं. There is a student rank 1 from subject X. देखो, he has scored 300
320 इन एंथ्रोपोलॉजी, चलो मान लिया, या हिंदी लिटरेचर में 320 मान लिया गया, एक स्टूडेंट का ले लिया एग्जाम्पल। तो व्हाट हैपेंस दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां देखता है, you should not look at the highest marks because that could be exemplary. नहीं, that could be accidental. That could be sheer boost of luck on that eventful day. समझ में आ रहा है? वो हो जाता है कई बार, हिट हो गया, इसलिए 320 दिख गया तुमको। But actually you should look कि भाई in the same X subject, where is the cluster? Majority is where? So if majority is between 260 to 280, if this is the majority यहां पर है, या majority is between 280 to 300, और majority is between 220 to 260, तीन cluster बना लो, where is the majority? मान लो कि majority is in 220 to 260, that subject is doing bad. नहीं, and if the majority is between 280 to 300, then it is performing good. And if the majority is 260 to 280, then it is doing quite well. Not exemplary, लेकिन ठीक चल रहा है उसका. All I was trying to explain you that what the rank 1 has scored is not your goal. Those marks are accidental. That was his day. And on his given day, समझ रहा है, कभी कभी तो जो 11th नंबर का बैट्समैन होता है वो भी छक्का मार देता है। नहीं, इमरान खान का नाम सुना है? इमरान खान बॉल किया, इधर 11th नंबर था बलविंदर सिंह संधू। अरे फिल्म देखा है 83? सरदार ने ताकत लगाया, चला गया छक्का, 6 रन। इसका मतलब क्या हो गया कि ही बिकम्स द रोल मॉडल ऑफ हाउ टू हिट 6? नहीं ना, दैट वाज एक्सीडेंटल। सो दिस इज एक्सीडेंटल। डोंट लुक एट एक्सीडेंटल मार्क्स, यू हैव टू लुक एट द मीन एवरेजेस विच आर कमिंग। समझ में आया? और मीन एवरेज आज भी बुरे से बुरे दिन में भी ज्योग्राफी का ठीक है। आइदर ज्योग्राफी इज 260 to 80 और इसके बीच में ही कहीं है ज्योग्राफी। still doing better than many other optionals. क्या टॉप 10 में कितना ज्योग्राफी से आया है? कितना है बताओ? रैंक 4 इज ज्योग्राफी, मेरा स्टूडेंट नहीं है। रैंक 10 इज ऑल्सो ज्योग्राफी। तो तुम घबरा क्यों रहे हो? 305 आ ही रहा है, टॉप 10 में दो रहता ही है। अरे किसी सब्जेक्ट में 3 आ गया और पूरा हल्ला कर दिया फेसबुक पे, इधर उधर। तुम लोग सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ जाते हो। विच इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स फॉर यू? यूपीएससी। यू वांट एनी इंफॉर्मेशन, वेयर टू कॉल? यूपीएससी ऑफिस। समझ में आया? कोई टीचर कहे कि मैंने 3 इंटरव्यू दिए थे, आरटीआई मारो तो पता चल जाएगा कि कितना इंटरव्यू दिए थे। आरटीआई का टाइम है ना। गो कॉल यूपीएससी सेंटर पे, कॉल करो, वहां पूछो, यू कैन इंक्वायर, दे प्रोवाइड यू मटेरियल। आरटीआई डालो कि विच सब्जेक्ट्स आर डूइंग गुड, विच सब्जेक्ट हैज बेटर एवरेज मार्क्स। व्हाट इज आस्क्ड जनरली कि विच सब्जेक्ट्स हाईएस्ट परसेंटेज। लोग हाईएस्ट परसेंटेज पूछता है तो बेचारा ज्योग्राफी थोड़ा नीचे आ जाता है। एंड दैट इज व्हाट, अब मैंने बताया तुमको ना, because the number of people writing mains is so much कि percentage नीचे आ जाता है naturally. Okay, so that was all about the course. So tomorrow I will begin my geography. समझे? We are starting with Oceanography. What you have to do, what you have to read and come back? Hydrology. The purpose of meeting today was to show my face. This is how I look, and this is your teacher. The idea was never to teach anything on geography. So, कल मिलते हैं। कितना टाइम हुआ है? 1.5 घंटा हुआ है बस। कल हम लोग का क्लास 2.5 से 3 घंटे का होगा, ठीक है ना? We have 2.5 hour तो मिनिमम है ही।
I can extend the classes to 3 hours. Again, that's my discretion. Okay, thank you. मैं यहाँ पे available हूँ. You want to ask personal questions, you can come and